the last class, we discussed questions on the scalar product of vectors, and today I'll take up direction cosines and direction ratios of a vector. Yes, consider the position vector OP of a point P x, y, z. Let OP makes angles alpha, beta, gamma with x-axis, y-axis and z-axis. Then alpha, beta and gamma are called the direction angles of the vector OP. यानी कि वेक्टर OP x-axis, y-axis और z-axis के साथ जो एंगल फॉर्म करता है उन्हें हम कहते हैं डायरेक्शन एंगल ऑफ द वेक्टर OP. Right? And the cosines of these angles are called as direction cosines of vector OP. और इन डायरेक्शन एंगल्स के जो कॉस की वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर. So here alpha, beta and gamma are the direction angles. So cos alpha, cos beta and cos gamma are the direction cosines DCs of vector OP. और डायरेक्शन कोसाइंस को हम डिनोट करते हैं विद लेटर्स L, M and N. So L is cos alpha, M is cos beta, N is cos gamma. Yes, consider a vector A given by A1 I cap plus A2 j cap plus A3 k cap, whose direction angles are alpha, beta and gamma. वेक्टर ए के डायरेक्शन एंगल्स हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा, यानी कि वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म करेगा अल्फ़ा, वाई एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म करेगा बीटा और जेड एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म करेगा गामा. राइट? नाउ सपोज आई कंसिडर वेक्टर ए डॉट आई कैप. दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज आई कैप. राइट? आई कैप कैन बी रिटन एज I cap plus 0 j cap plus 0 k cap. If I compute the dot product of these two vectors, I'll get A1. Right? Because A1 into 1 will give you A1, A2 into 0 is 0 and A3 into 0 is 0. So vector A dot I cap is A1. Now by definition, dot product is defined as magnitude of vector A into magnitude of vector I cap into cos of angle between vector A and I cap. Now what is the angle between vector A and I cap? Look here. Vector A और x एक्सिस के बीच का एंगल है अल्फा. राइट? ये आपका वेक्टर A और ये मान लो x एक्सिस, तो ये एंगल है आपका अल्फ़ा. अब जो आई कैप है वो x एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, तो वेक्टर a और आई कैप के बीच का एंगल कितना हो गया? अल्फ़ा. सो दिस डॉट प्रोडक्ट बाय डेफिनेशन विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई कैप इनटू कॉस अल्फ़ा, दैट इज इक्वल टू a1. सो फ्रॉम हियर कॉस अल्फ़ा इज a1 over magnitude of vector A into magnitude of vector I cap. Now I cap is a unit vector, so its magnitude will be 1. So from here cos alpha will be A1 over magnitude of vector A, and cos alpha is denoted with L, so L is equal to A1 over magnitude of vector A. Similarly, vector A dot j cap. Yes, j cap is 0 I cap plus j cap plus 0 k cap. Right? So when I consider dot product of this vector A with j cap, I'll get A1 into 0, 0 plus A2 into 1 plus A3 into 0. So I'll get A2. Now by definition, this dot product is equal to magnitude of vector A into magnitude of vector j cap into cos of angle between vector A and j cap. Yes, angle between vector A and y axis is beta.
and now j cap is a unit vector in the direction of y-axis. So angle between vector A and j cap will be beta. So I'll get magnitude vector A into magnitude j cap into cos beta. This equals A2. So from here, cos beta will be A2 over magnitude of vector A, because magnitude of j cap is 1. It's a unit vector. Now cos beta is denoted with m, so I'll get m equals A2 over magnitude of vector A. And similarly, vector A dot k cap will be equal to A3, and it will be magnitude of vector A into magnitude of k cap into cos gamma equals A3. So from here, cos gamma is A3 over magnitude of vector A. So n is equal to A3 over magnitude of vector A. So we have obtained L is equal to A1 over magnitude vector A, m is equal to A2 over magnitude A, and n is equal to A3 over magnitude vector A. Right? Now look here. Vector A was this. Now I divide vector A with its magnitude. That is A1 I cap plus A2 j cap plus A3 k cap is divided by magnitude of vector A. Now we know that vector A over its magnitude is a unit vector in the direction of vector A, which is A cap. So A cap is A1 over magnitude of vector A, I cap plus A2 over magnitude of vector A, j cap plus A3 over magnitude of vector A, k cap. Separate kiye components. Now this is equals to L. So I get Li cap. This equals M. Here I get Mj cap. And here I get N. So A cap is Li cap plus Mj cap plus Nk cap. Right? Now, magnitude of vector A cap is 1 unit because it is a unit vector in the direction of vector A. So magnitude of vector A cap is 1. अब A cap आपका ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर्ड plus n squared equals 1. So this implies L square plus M square plus n square equals 1. This is the relation between the direction cosines L, M and n. So thus we have seen that unit vector in the direction of vector A is given by A cap equals Li cap plus Mj cap plus Nk cap. Right? Now look here. इसका मतलब है कि वेक्टर ए की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है ए कैप, उसके जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं दे आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ए. यानी कि अगर मुझे कभी किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, सो व्हाट आई डू, आई विल फाइंड ए कैप, यानी कि उस वेक्टर की डायरेक्शन में आई फाइंड द यूनिट वेक्टर. उस यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स होंगे दे आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ए. राइट? और डायरेक्शन कोसाइंस एल, एम और एन के बीच में क्या कनेक्शन है? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स 1. राइट? यस. सो एल इज इक्वल टू दिस, M is given by this and N is given by this. From here, A1 is equal to L into magnitude of vector A, A2 is M into magnitude of vector A, and A3 is N into magnitude of vector A. Let magnitude of vector A be R. So from here, A1 is equal to LR, A2 will be equal to MR, A3 will be equal to NR. Now these numbers LR, MR, NR proportional to the direction cosines are called as the direction ratios of the vector A. यानी कि इस वेक्टर A में ये जो A1, A2, A3 है, इन्हें हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर A. Yes, let's take few questions.
Find the direction cosines of the vector A equals 2i cap plus 3j cap plus k cap. Yes. अभी हमने देखा कि वेक्टर ए की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है ए कैप, इट इज़ एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, जहाँ पर एल एम और एन है वेक्टर ए के डायरेक्शन कोसाइंस. तो यानी कि अगर मुझे एल एम और एन फाइंड आउट करना है तो आई नीड टू फाइंड ए कैप. राइट, वी नो दैट वेक्टर ए कैप इज गिवन बाय वेक्टर ए ओवर इट्स मैग्नीट्यूड. So first I'll find out magnitude of this vector A. So magnitude of vector A is given by square root of 2 plus square of 3 plus square of 1. That is square root 4 plus 9 plus 1. That is root 14. So A cap will be equal to 2i cap plus 3j cap plus k cap. This is vector A divided by its magnitude, root 14. Separate the components. I'll get 2 over root 14i cap, 3 over root 14 j cap plus 1 over root 14 k cap. Now, comparing these two, I'll get L equals 2 over root 14, M equals 3 over root 14 and N equals 1 over root 14. So, direction cosines are 2 over root 14, 3 over root 14 and 1 over root 14. Next question is, find the direction cosines of the vector joining the points A with coordinates 1, 2, minus 3 and B with coordinates minus 1, minus 2, 1 directed from A to B. We have to find the direction cosines of the vector AB. Right? Yes, directions cosines of vector AB निकालने के लिए I'll find out a unit vector in the direction of vector AB. That is AB cap. इसके जो स्केलर कंपोनेंट्स होंगे दे आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ए बी. अब सबसे पहले मुझे निकालना है वेक्टर ए बी. यस, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, हेड माइनस टेल, इट्स माइनस वन आई कैप, माइनस टू जे कैप, 1 माइनस 3 के कैप. सो आई गेट वेक्टर ए बी एज माइनस 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप plus 4k cap. Now I'll find a unit vector in the direction of vector AB. It will be given by vector AB over its magnitude. So now I'll find out magnitude of vector AB, which is square root of 4 plus 16 plus 16. That is root 36, which is 6. So unit vector in the direction of vector AB will be minus 2i cap minus 4j cap plus 4k cap over 6. That is minus 1 by 3i cap minus 2 by 3j cap plus 2 by 3 k cap. अब ये ए बी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, तो इसके जो कंपोनेंट्स होंगे स्केलर कंपोनेंट्स, दे आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ए बी. सो एल इज minus 1 by 3, m is minus 2 by 3 and n will be 2 by 3. Right? Next question is, find a vector A of magnitude 5 root 2 units, making an angle of pi by 4 with x-axis, pi by 2 with y-axis and an acute angle theta with z-axis. Right? तो एक वेक्टर A निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड हो 5 रूट 2 यूनिट्स और जिसके डायरेक्शन एंगल्स हैं पाई बाय 4, पाई बाय 2 एंड थीटा. Right? So direction angles are this. So direction cosines of A will be, L will be given by cos alpha, that is cos pi by 4, which is 1 by root 2. M will be cos beta, which is pi by 2. This is alpha, this is beta, this is gamma. Cos pi by 2 is 0. And N will be cos gamma, that is cos theta. Right? तो अब सबसे पहले हमें थीटा निकालना है. We know that L squared plus m squared plus n squared equals 1. So 1 by root 2 squared plus 0 squared plus cos square theta equals 1. So from here cos square theta will be 1 minus 1 by 2, that is 1 by 2. So cos theta will be plus minus 1 by root 2. But as theta is acute, therefore cos theta cannot be negative.
So cos theta will be 1 over root 2. That is, n is equal to 1 by root 2. We know that unit vector in the direction of vector A is given by A cap, which is equal to Li cap plus Mj cap plus Nk cap. Right? Now, L is 1 by root 2, M is 0 and N is 1 by root 2. So, A cap will be equal to 1 over root 2 I cap plus 0 J cap plus 1 over root 2 K cap. Right? अब ये है वेक्टर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड है 1 यूनिट. अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है 5 रूट 2 यूनिट्स. सो डू यू अग्री दैट वेक्टर ए विल बी इक्वल टू 5 रूट 2 इंटू ए कैप. राइट? क्योंकि जब मैं ए कैप को स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये जो वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5 रूट 2. वही मुझे चाहिए. So 5 root 2 into 1 over root 2 I cap plus 0 J cap plus 1 over root 2 K cap. अब एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हर कंपोनेंट स्केलर से मल्टीप्लाई होगा. तो वेक्टर A विल बी 5 I cap plus 0 J cap plus 5 K cap. Now we will discuss projection of one vector on another vector. Yes. Let A and B be two vectors. Yes, this is vector A, that is vector AC. Vector AC is vector A and vector AB is vector B. Right? From this point C, I have dropped a perpendicular CM on AB. Right? So this AM is called as the projection of vector A on vector B. AM is called as the projection of vector A on vector B. Right? Now in this triangle AMC, AM over AC will be cos theta, base over hypotenuse, where theta is the angle between vector A and vector B. From here, AM will be equal to AC cos theta. Right? Now, what is AC? Do you agree? It is the length of this segment. So, can I say it is the magnitude of the vector A? So, AM will be equal to magnitude of vector A into cos theta. Right? अब ये जो थीटा है, इट इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. और आपने पढ़ा है जब थीटा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है तो उस केस में कॉस थीटा इज गिवन बाय वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. दिस विल गेट कैंसल आउट. सो ए एम इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. So, projection of vector A on vector B is equal to vector A dot vector B over magnitude of vector B. जिस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालनी है डिनोमिनेटर में उसका मैग्नीट्यूड आएगा. राइट? एंड यस, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस थिंग? वेक्टर B over its magnitude. Yes, it is B cap. So, projection of vector A on B is equal to vector A dot B cap. Right? Now similarly, if from this point B I drop a perpendicular BN on AC, then this AN is called as the projection of vector B on vector A. Right? Now, AN over AB will be cos theta. So, AN will be AB into cos theta. Now, AB is the length of this segment. So, it is magnitude of vector B. And cos theta is vector A dot vector B over magnitude of A into magnitude of vector B. This will get cancelled out. So, AN is equal to vector A dot vector B over magnitude of vector A.
So projection of vector B on vector A will be vector A dot vector B divided by magnitude of vector A. जिस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालनी है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, राइट. एंड अगेन दिस इज वेक्टर B dot A cap because vector A over its magnitude is A cap. Yes, now look here, we have learned that projection of vector A on vector B is vector A dot vector B over magnitude of vector B, और जिसे हम लिख सकते हैं vector A dot B cap, right? Now look here, let this be the vector A, A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap. Vector A dot I cap, will it be equal to A1? Vector A dot J cap is A2. Vector A dot K cap is A3. Now this is the projection of vector A on x-axis because I cap is a unit vector in the direction of x-axis. So projection of vector A on x-axis is A1. This is the projection of vector A on y-axis, which is A2. And this is the projection of vector A on z-axis, which is A3. So when vector is given in the component form, the scalar components A1, A2, A3, they are the projections of the vector A on x, y and z axis respectively. That is the components of the vector A along x-axis, y-axis and z-axis. Yes, now let's take one question. Find the projection of vector A 2i cap plus 3j cap plus 2k cap on vector B, which is I cap plus 2j cap plus k cap, right? हमें वेक्टर A की प्रोजेक्शन वेक्टर B पर निकालनी है. We know that projection of vector A on vector B is given by vector A dot vector B divided by magnitude of vector B. जिस वेक्टर के ऊपर निकालनी है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, राइट. तो अब मुझे ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है. वेक्टर A डॉट वेक्टर B, यस इट विल बी 2 into 1 plus 3 into 2 plus 2 into 1, that is 2 plus 6 plus 2, which is 10. And magnitude of vector B will be square root of 1 squared plus 2 squared plus 1 squared. It is root 6. So projection of vector A on vector B will be 10 over root 6, right? Which I can write 10 root 6 over 6, that is 5 by 3 root 6.